why you deserve to be picked by Santa? Because I have a very nice heart and I'm very honest. So I think I deserve a gift from Santa. Well, I got it already. And I don't need any gifts. I have so much of love and affection of everybody around me and not around me. So I'm happy the way it is right now for me. So yeah, just pray and hope my project does well and everybody enjoys it and likes it. That's it. Why I deserve to be picked by Santa? Okay, because of what I know of Santa is that Santa likes really good people with a good heart. So Santa should pick me up because I am very, very good. I am a donkey praising my own tail. So I have a good heart. So I think Santa should pick me up. And also Santa should pick me up because whenever I get an opportunity in life, actually I don't get an opportunity. I have to create an opportunity where I go and be a Santa for people even when it is not Christmas. They say you're not supposed to talk about it when you do something. So I'm not talking about it in detail. But yeah, I love to play Santa for a lot of people even when it is not Christmas. So I think these are the two reasons why Santa should pick me and meet me and give me a tight hug. I like gifts and I think I love everything that is sent to me by friends, by my fans. तो और सेंटा जी भी सेम ही वो भी सेंटा क्लॉज भी सेम ही काम करते हैं वो भी गिफ्ट्स भेजते हैं एंड दे गिव यू गुड विशेस एंड आई एम भुक्कड़ यू कैन से फॉर गिफ्ट्स एंड फॉर गुड विशेस सेंटा से यही हेल्थ एंड गुड हेल्थ हैप्पीनेस एंड वॉट एवर आई डिज़र्व of my utmost I should get. Because I'm the cutest. जैसा ये साल बीता, I really want my next year to be more exciting, more happening, more of work and happiness. But that's it with my parents, friends and everyone. Santa, because I am a very dedicated and hardworking girl. Christmas में मैं इस हालत में tree set up कर रही हूँ. So Santa should give me a lot of gifts. Justify the wrong and right things done this year. Justify wrong and right things. Well, what's the definition of wrong, first of all? But right, as I think, just try not to harm anybody and, try not to hurt anybody. That's the rightest thing you can do. And yeah, I mean, by default that becomes, if you do it, then it becomes wrong as well. So just try not to harm and, hurt people and just, respect everybody. Okay, I'll talk about the wrong first. So wrong things I would say is not looking after my health very well when I was working in Indonesia, because I was just working round the clock, so my health kind of took a back seat. So this is the wrong thing that I did, because health is wealth. And besides that, I don't think I've done anything wrong. At least not intentionally. I don't know, unintentionally. If I've hurt somebody, I'm sorry. But intentionally, no, I've not done anything wrong. And about the right things is that I have looked after my health way better than what I have looked out after my health all these years before. So that is a good thing. And the good thing that I did was interacting with my fans more, because the way I am interacting with my fans today, I don't think I've ever interacted so much with my fans in the beginning of my career, and I'm apologetic about it to my fans. So yeah, that is another good thing that I've done. Third good thing I would say is traveling. I love traveling, so I think whenever I can, I just go and travel, and I think travel makes you grow a lot as a person. So I'm glad that I traveled. Right things are that I have picked up some good projects which have done really good as a career to me. Jahan Dil Se Dur is one of them. And wrong things, see, क्या होता है जब आदमी कोई गलत चीज़ कर रहा होता है तो बताता नहीं है, उसको अंदर अंदर रियलाइज़ हो जाता है यार ये गलत किया है, इसको ठीक करना है अब. हाँ, तो जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सही नहीं है एंड आई शुड चेंज देम, सो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और मे बी फ्रॉम स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर आई वोंट रिपीट
all those things. रॉन्ग चीज़ें मैंने इतनी तो नहीं की है जो आई डोंट थिंक, पर की तो है। लाइक थोड़े बहुत फाइट्स हुए हैं कभी फ्रेंड्स के साथ विच आई नेवर वांटेड, आई डोंट लाइक। एंड अच्छी चीज़ दैट आई स्टार्टेड अ न्यू शो विथ सो मैनी गुड पीपल को एक्टर्स एंड आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू दिस द वेरी नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। रॉन्ग थिंग्स तो ऑब्वियसली हम सब करते ही हैं, थोड़े मतलब अनइंटेंशनली इंटेंशनली हो ही जाते हैं। जस्टिफाई मुझे पता नहीं किस बारे में बात करूं, बट आई थिंक मैंने इस बार मेरा पूरे साल में मैंने अपने वर्कआउट को बहुत ही कम प्रायोरिटी दिया है। दैट वाज अ रॉन्ग थिंग एंड नेक्स्ट ईयर से आई एम गोइंग टू बी मोर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग टुवर्ड्स दैट। If you were to play a secret Santa for the following people, what would you like to give them? Modi ji? First of all, I'll give him 2000 का नोट and as a gift। और अभी आजकल ATM में काफ़ी अभी भी लाइंस हैं, सो 500 के नोट की थोड़ी सी अभी भी शॉर्टेज है। सो आई थिंक 500 और 2000 के नोट दोनों उनको गिफ्ट दूंगा। और but I still appreciate his move, the demonetization move। People are for and against it। थोड़ा मुश्किल है, but eventually I think it's gonna do well for all of us। I think playing a secret Santa, I would just want to invite him to my house and feed him some nice gujju dhokla for doing a good job. What the transformation that he's bought currently, a lot of people have different views about it, but what I have to say about it is that in the long run, if it is fruitful for all of us, then it's the right decision. So we have to wait and watch how well this thing does for our nation, for our country. But for now, I think for the rest of the wonderful work that he's done, I would play a Santa and feed him dhokla. Come to my house. नरेंद्र मोदी जी का अगर मैं सीक्रेट सांता बनूंगा तो मैं उनको बोलूँगा, उनको मैं शायद थोड़ी सी स्लीपिंग पिल देना चाहूँगा, क्योंकि वो सोते नहीं हैं यार बिल्कुल। वो ताकि वो थोड़ा सोएं, और काम तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सोएं तो यू नो ही विल ऑल्सो लुक फ्रेश। थोड़ा सा टायर्ड लगते हैं मुझे आजकल लोग बहुत काम करके। बिग थैंक यू कार्ड वो हमारे देश के लिए बहुत कर रहे हैं एंड आई नो कि अभी बहुत इनकन्वीनियंट हो रहा है एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट लोग गुस्सा हो रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट आई होप इन द लॉन्ग रन कि ये हमारे लिए अच्छा हो एंड आई होप कि अभी जो हमारे टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं उससे हमारे देश का फ़ायदा हो एंड समवन हैड टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड इट्स ओके इफ ही डिड, इट्स अ वेरी गुड थिंग। Co-actor? I'll probably give Amit Behal something। Unfortunately, he just had a major fire in his house, so I'll probably gift him something। My ex-co-actor Nazim, I would want to give him all the love that I received for him by all the Indonesian fans who missed him in Indonesia and who told me to please give him their best regards and their unconditional love. So yeah, this is what I would love to give you on behalf of your Indonesian fans who love you। अपने को एक्टर को मैं ब्रेक देना चाहूँगा, क्योंकि हम सब लोग इतना काम कर रहे हैं मंडे टू संडे टेलीकास्ट की वजह से, विच इज़ अ गुड थिंग। वी ऑल वांट टू वर्क, बट देन अगेन ब्रेक भी होना चाहिए और थोड़ा सा फन वगैरह भी होना चाहिए। आई वुड लाइक टू गिफ्ट देम अ वेकेशन टू को एक्टर्स। पूजा आई वुड गिफ्ट, वो क्या डालते हैं मुंह में बच्चे जब रोते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आई विल गिफ्ट हर दैट, क्योंकि शी इज़ सो नॉइजी। लाइक मतलब मैं एक भी दिन शांति से मेकअप रूम में नहीं बैठी, वो आती है तो तूफान आता है, हमेशा बात करती रहती है एंड एट द सेम टाइम जब वो नहीं होती है जैसे आज, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। सो आई थिंक यस, पूजा को मैं वो गिफ्ट करूँगी। शी इज़ गोइंग टू किल मी। Ekta Kapoor? Well, I haven't worked with her yet, so I don't know at all। So once, if at all, we work together, let's see, maybe some TRPs which they've never received while I sign up their show, so that could be the best gift for her, I guess। Ekta Kapoor. Let me think. I would want to give her a blockbuster show with me in it। एकता कपूर जी के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि वो बहुत अच्छे शोज़ बनाती हैं एंड TRP उनकी हमेशा स्काई तक ही पहुँचती हैं, मतलब तो
मैं यही कहूँगा कि आप ऐसी शो बनाते रहिए और देखिए थोड़े अगल बगल में भी और अच्छे लड़के हैं जो अच्छी एक्टिंग करते हैं ग्रुप के अंदर को छोड़ के आई थिंक उनकी वजह से मेरा करियर है, तो मैं उनको जो भी दूँ इट विल ऑलवेज बी लेस, बट आई थिंक आई विल गिव हर लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स बिकॉज आई नो उनको स्वीट्स बहुत अच्छे लगते हैं. Moni Roy. Moni Roy also I don't know personally, so I think probably Nagin 3 would be the best gift for her, if I'm not wrong. Nagin 2 is going on, so Nagin 3 would be a gift for her. Beautiful, and after long I have seen a girl in TV industry who has got good acting skills and who looks beautiful as well. Moni Roy, oh God, she has everything. So she's so pretty, one of the most prettiest girls. I think I'll gift her. I'll gift her a nice dress because she likes dressing up and stuff. So yeah. Salman Khan. Oh, he's a gifted guy, yeah. He has everything. And what else does he need? A big boss. I mean, he's doing extremely well. And yeah, I mean, good thing is he does a lot of things for, poor as well. So I think Santa will look after him directly. Salman Khan. What I would like to give him? I would like to give him true love because he has everything in his life. A lovely family who loves him. He's doing so well professionally and he has been doing so well all these years. So I think the one thing that I would like to give Salman Khan as a Santa is true love, because I think that is something that is missing. By true love I mean a girlfriend or a wife's love. क्या गिफ्ट देंगे, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कोई गिफ्ट. उनके यहाँ सब कुछ है यार. Salman Khan, I would like to gift him myself. No, I'm kidding. Salman Khan, I don't know, trophy. I think Big Boss में जितनी मेहनत वो करते हैं और हर वीकेंड पे जितना सबकी क्लास लेते हैं, उनको बहुत कम क्रेडिट मिलता है उसके लिए, और मैं फॉलो करती हूँ, तो आई थिंक उसके लिए मैं उनको ट्रॉफी दूंगी. Sing any serials track in Jingle Bells tune. I think I remember this Delhi's GRA song. GRA, 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 More Gia, More Gia, More Gia. And उसके बाद मैं lyrics ही भूल गया यार. And it's so difficult to just sing it. I'm just, I mean, I don't think I can do better than this. Okay. साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया. Okay, I think I can only sing this much. It's little difficult. जाना ना दिल से दूर तुम, जाना ना दिल से दूर तुम, हे जाना ना. Sing हमसे है लाइफ का टाइटल ट्रैक in Jingle Bells. Feel the high, touch the... Oh no, I'm very bad at this. I don't know the words only. Lastly, एक बार अपने fans के लिए Jingle Bell. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Da 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 da, riding on your way. Hey, jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along and riding on a sledge. I think that's how it is. Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is riding along. Is coming along, riding all the way. Hey, jingle bell, jingle all the way. Yay, Merry Christmas! मैंने बचपन में स्कूल टाइम पे गाया था यार, अभी तो बिल्कुल याद भी नहीं है. Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming around, riding on the way. Jingle bells, jingle on the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells. That's it. आप लोगों ने मुझे साथ निभाना साथिया में भी उतना ही प्यार दिया था, एंड योर इन जाना ना दिल से दूर भी आप लोग उतना ही प्यार देते रहिए, देखते रहिए शो, एंड कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस. ऑल वी नीड इज यू गाइज. I would like to say thank you for all the love, all the support. मैं आपके सारे इंस्टा पे कमेंट्स, फेसबुक मैसेजेस और सब कुछ ट्राई करती हूँ टाइम टू टाइम टू बी अपडेटेड विद दैट. मैं सब पढ़ती हूँ. ऑब्वियसली इंडिविजुअली रिप्लाई करना मुश्किल होता है, सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट. हम जो भी है आज वो आप लोग की वजह से ही है. सो मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. This is Harshad Arora and you're watching me on India Forums. Do subscribe on India Forums.
We hope that you received love from your favorite TV stars and also enjoyed our Christmas segment. So do like, share and subscribe to India Forums on YouTube. Addiction at its best. Kajal Mishra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.